Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, there is some instruments that we use to measure everything, right? जैसे अगर हमें किसी भी चीज का वेट नापना हो तो हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं. अगर हमें बुखार मेजर करना हो, टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं. ऐसे ही हर एक चीज मेजर करने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बना होता है. तो let's study वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. Let's start. This chapter is all about chapter 11, scientific instruments and terms. So kids, let's study. Instruments used by scientists for different purposes are called scientific instruments, right? So scientific instruments वो instruments होते हैं जो scientists द्वारा use किए जाते हैं उनके scientific research वर्क के लिए, right kids? So they help us in our day-to-day life और ये हमारे लिए day-to-day life में भी help करती है, right? तो वो क्या चीजें हैं? Let's see. So write the names of the scientific instruments with the help of the help list. नीचे हमें एक help list दी गई है, इसकी मदद से हमें यहाँ पर clues पढ़ के इनके आंसर्स write down करने हैं. Let's start. यहाँ पर है instruments का name जो हमें लिखना है और ये है उनके uses जो यहाँ पे दिए गए हैं. तो let's read and make a guess that कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा. पर उससे पहले हम पढ़ेंगे let me answer. Alright, let me answer. Have you ever used any scientific instrument? क्या आपने कभी किसी scientific instrument को इस्तेमाल करके देखा है? Well kids, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा जिसको आपको एक बार यूज करके जरूर देखना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is question number 1. Dash examines internal parts of the body. हमारी internal parts of the body किससे देखे जाते हैं या एग्जामिन किए जाते हैं? वो है एंडोस्कोप से. So we'll write ENDOSCOPE, endoscope. Next is records electric waves of the brain. हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिक वेव्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? It is, yes kids, that is EEG. So we'll write EEG. Next is dash compares intensity of colors. Colors की intensity को किससे मेजर किया जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है? It is with the help of colorimeter. COLORIMETER, colorimeter. Next is number 4. Traces movements of the heart. हमारी हार्ट की मूवमेंट्स को एग्जामिन यानी कि देखा जाता है, ट्रेस किया जाता है with the help of ultrasonioscope. So we'll write ultrasonioscope. Next is analysis of the sounds of lungs and heart. हमारे दिल और हमारे लंग्स की जो साउंड है उसको किससे एनालाइज किया जाता है? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? Kids, it's a, yes, that's very much correct. It's a stethoscope. So we'll write stethoscope. Number 6. Dash records changes in the physiological processes used as a lie detector. So kids, कभी भी कोई पुलिस स्टेशन में अगर इंटेरोगेशन करना होता है तो उसके लिए एक लाई डिटेक्टर डिवाइस यूज किया जाता है जिससे वो इंसान के अंदर चल रहे थॉट से ये पता लगाता है that if that a person is telling the truth or not, right? So lie detector का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. तो उस लाई डिटेक्टर का नाम क्या होता है? That is a polygraph, right kids? So we'll write polygraph. Next is number 7. Uses ultrasound to make ecograms. Ecograms बनाने के लिए ये ultrasound का इस्तेमाल करता है. What is this device about? It is a cardiogram. So we'll write cardiogram. Next is 8. Measures relative density of milk. तो density of milk ये किससे मेजर किया जाता है? Density of milk is measured through the help of lactometer. Lacto means milk. So we'll write lactometer. Number 9 is dash measures the blood pressure. हमारा blood pressure कैसे मेजर किया जाता है? It is with the help of sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Next is dash measures the height of an object above a fixed level. So किससे एक फिक्स्ड लेवल से ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर किया जाता है? It is with the help of altimeter. ELTIMETER, altimeter.
Right, kids? So now let's move forward to the info bits. J. Ferguson invented the first improved liquid crystal display, which is LCD, right kids? So J. Ferguson ने invent किया था एक improved version of LCD, which is liquid crystal display, right? Now let's move forward to the next page. Alright kids, so here we are provided with another activity. Now let's see what is this about. So kids, इसके अंदर हमें कुछ clues दिए गए हैं जिसको read करके हमें ये पता लगाना है that what that thing is actually called. I mean that किसी भी चीज के लिए जो study होता है उसको उस study को क्या कहा जाता है. For example, study of teeth, study of trees, study of anything like that, study of diamonds or study of stones are also having a name. So what that particular activity or study means or names, हम उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे. So let's start. But first we would learn the let me answer. So what is let me answer for today is, which scientific term do you use commonly? आप कौन सा scientific term commonly use करते हैं? Just write down it in a notebook and also write the meaning of that scientific term. Right kids, now let's move forward to the exercise portion. Here we have fill in the blanks with the help of the help list. So kids, हमें यहाँ पर नीचे एक help list भी provide किया गया है. Now let's read the clues and write down the correct answers. Number 1 is the study of fossils is called. Fossils की study को क्या कहा जाता है kids? Fossils की study को कहा जाता है paleontology. So we'll write paleontology. P-A-L-E-N-T-O-L-O-G-Y, paleontology. The study of fruits is called. Fruits की study को क्या कहा जाता है kids? The study of fruits is called as pomology. So we'll write P-O-M-O-L-O-G-Y, pomology. Next is the study of teeth and gums is called. Study of teeth and gums. हमारे दांत और मसूड़ों की study को क्या कहा जाता है? That is odontology. Odontology. Next is the study of human beauty. Human beauty को study करने के लिए उस study को क्या कहा जाता है? That is calology. So we'll write calology. K-A-L-O-G-Y, calology. Next is the study of environment is called. Study of environment को क्या कहा जाता है? That is called ecology. Where word logy always means as. Logy word का मतलब है study, right? So, eco means environment. So, ecology is the term for the study of environment. Right, kids? Next is the study of heredity is called. Heredity की study को क्या कहा जाता है, kids? That is called genetics. So, we'll write G-E-N-E-T-I-C-S, genetics. Number 7 is the science taking care of health is called. So, the science taking care of health is called medicine. So, we'll write M-E-D-I-C, M-E-D-I-C-I-N-E, medicine. Next is number 8. Science of healthcare and treatment of animals is called. Well, kids, animals की study को क्या कहा जाता है? Basically, उनकी जो health care है और उनका जो treatment है, उसको क्या कहा जाता है? For that, we have the term of veterinary science. So we'll write veterinary science. Next is the science dealing with the effect of radiation on the living beings is called radiology. So we'll write L-R-A-D-I-O-L-O-G-Y, radiology. Dash. Last is number 10. The science study of classification and nomenclature is called. Nomenclature and classification of science को क्या कहा जाता है? It is basically called taxonomy. So we'll write T-A-X-N-O, taxonomy. So kids, with this हमारी activity होती है complete. Now we'll read about the info bits.
Infobits, scientific terminology is the part of the language that is used by scientists in the context of their professional activities. So kids, जैसे ये हम ये studies का नाम जान चुके हैं, तो you should also know that the scientists जब वो इसके बारे में काम करते हैं, इन studies पे काम करते हैं, तो वैसे scientific terminologies का use जरूर करते हैं, जिसमें उनका context जो है उनकी professional activities से relatable होता है. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.